Welcome and namaste everybody. The future world, that is the chapter we are going to do, which is of English reader, stand 7. Future, what do you understand by future? Future is that action which is to be taken in the future. Means that is the time which will come after the present. अभी जो present है इसके आने वाले time को future कहते हैं. And when we are talking about future world, आने वाला time कैसा होगा, आने वाली दुनिया कैसी होगी. Now let's begin. Science is taking a quantum leaps. Quantum means manifold, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो बढ़ रहा है, that is quantum leap. Leaps मतलब jumps. In this progress of science and technology, many new products have come up in the market. Given below are some prediction. Prediction means that is something which is told before. पहले से ही जिसके बारे में बोल दिया जाए, भविष्यवाणी जो कर दिया जाए, that is prediction. तो first prediction is by the year 2020, shower bath means जो हम लोग अभी बैदिंग करते हैं शावर से या पानी से, बाल्टी से, मग से पानी जो नहाते हैं, उस चीज़ को लिया. शावर बाथ विल बी रिप्लेस्ड, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नेटिक क्लीनिंग होगा. और मैग्नेटिक क्लीनिंग में क्या प्रोसेस होगा? व्हाट विल द प्रोसेस? डर्ट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, सारे डर्ट को नेगेटिवली चार्ज कर दिया जाएगा बाय एनी प्रोसेस एंड रिपेल्ड फ्रॉम द बॉडी इन लेस देन 2 seconds. 2 सेकेंड में सारी गंदगी शरीर की दूर हो जाएगी. दैट विल बी very interesting. That will save water, soaps, time, energy. That will be fun, isn't it? You will be fresh within 2 seconds without any expense. Now the second is prediction 2. In the year 2023, that is in the next year, if you get sick, you will be placed on a belt that will carry you through high-tech equipment. हाई-टेक इक्विपमेंट मीन्स जो जिसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ हो, एकदम हाई लेवल का टेक्नोलॉजी लगा हुआ हो. इक्विपमेंट मीन्स मशीनरीज दैट विल ऑटोमेटिकली डायग्नोज मीन्स दैट डॉक्टर्स एग्जैक्टली बताते हैं कि कौन सा सिकनेस है, कौन सा एलिमेंट है अबाउट अ पर्सन. व्हेन समवन टेल्स एग्जैक्ट illness of a person, then it is diagnosis. So automatically who will diagnose? The high-tech equipment, and then fix the problems. If required, the mechanical arms using lasers laser is a type of light, will perform microsurgery, एकदम छोटा वाला सर्जरी वो लोग करेंगे. and if you cannot be repaired, इतना करने के बावजूद अगर you are not to be repaired, तो you will be used for parts, दूसरे बॉडी पार्ट्स दूसरे लोगों के काम आओगे. लाइक डोनेशन जो होता है, ऑर्गन डोनेशन. जस्ट लाइक इफ यू वांट टू बी रिपेयर्ड, योर बॉडी पार्ट्स विल बी यूज्ड फॉर अदर पीपल. नाउ दिस इज प्रेडिक्शन 3. नाउ यू लुक एट द पिक्चर हाउ दिस इज बीइंग डन, कि हाउ मैकेनाइज्ड बेल्ट्स आर केप्ट ऑन वर्क and you are being diagnosed and you are all smile. You are not worried. See, you are very much assured कि यहाँ पर कुछ error नहीं होने वाला, कोई human error नहीं होने वाला, because they are programmed like that, so there won't be any error. देखो ये लेज़र लाइट से ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब ये पेनलेस होगा, दर्द वगैरह भी नहीं होगा, बस ट्रीटमेंट हो जाएगा, सर्जरी हो जाएगा. इतना छोटा सा सर्जरी होगा कि जैसे इंजेक्शन लगता हो और काम हो गया हो, उस तरह से सर्जरी होगा. एकदम एक्यूरेसी होगा कि जहाँ पर प्रॉब्लम है बस वहीं पर ट्रीटमेंट शुरू होगा और वहीं पर ट्रीट हो करके यू विल बी ऑल गुड, ऑल फाइन. प्रेडिक्शन 3. In the year 2025, hydrogen fueled bionic legs. Bionics means what? That if you are having biological capability, तुम्हारे पास पैर रहेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा और परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उसमें फिट कर दिया जाएगा. तो दैट इज़ बायोनिक लेग्स. फ्यूल्ड किससे किया जाएगा, किससे चलेगा वो? हाइड्रोजन से. फ्यूल मीन्स जैसे पेट्रोल डाला जाता है गाड़ी में, उसी तरह से वो हाइड्रोजन से लेग्स तुम्हारा इनेबल होगा. विल बी एबल टू प्रोपेल, मतलब स्पीड करके जो भागेगा. प्रोपेल मीन्स जो राउंड चक्कर प्रोपेलर जो लगा रहता है, लाइक इन शिप्स वगैरह में, पनडुब्बी वगैरह में रहता है प्रोपेलर, नाव वगैरह में प्रोपेलर लगा रहता है, वो प्रोपेल करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है. अ ह्यूमन एट अ स्पीड ऑफ 55 miles per hour on a
फ्लैट सरफेस, इसका स्पीड रहेगा 55 माइल्स पर आवर। बायोनिक लेग्स विल कॉस्ट 1 लाख and air brakes will be optional. All these are prediction. This is of course a very interesting prediction, and if this will be true in coming future, your all this automobile industry will be vanished, because that will be replaced by this propelling legs only, right? सारे पेट्रोल डीजल का खपत ख़त्म हो जाएगा, बाइक्स वगैरह के फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, मतलब वो एक पूरा इंडस्ट्री ही ख़त्म हो जाएगा। जो तुम लोग ऐड देखते हो टीवी में कार्स बाइक्स वगैरह का, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, बायोनिक लेग्स का ऐड आएगा, तो दैट विल बी रियली रिवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज prediction 4. What is prediction 4? In the year 2030, cars will be able to carry on intelligent conversation with the driver. मतलब there will be no need to take companions with you. Companions means friends, मतलब साथ में जो रहने वाला होता है, that is friends. उन लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग अपने आप में ही अपने कार के ही साथ, कार विल बी योर फ्रेंड। तो ड्राइवर जो भी चलाएगा गाड़ी वो उसके साथ आराम से बातचीत कर सकेगा। दैट विल बी, इट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें फिट कर दिया जाएगा, और तुम्हें दोस्त की कमी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा कार ही तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। नाउ प्रेडिक्शन 5, इन द ईयर 2035 फ्लाई स्वेटर्स, एंड इट इज़ फ्लाई स्वेटर, जो कि मच्छर मारने के लिए हमारे पास नहीं रहता है, ऐसे बैडमिंटन बना हुआ रहता है, जिसमें ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं और मच्छर को मारते हैं, भगाते हैं, उसी को कहते हैं फ्लाई स्वेटर। अब क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है कि फ्लाई स्वेटर विल बी रिप्लेस्ड विथ स्मॉल लेजर्स कैपेबल, मतलब ये फ्लाई स्वेटर फिर यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, लेज़र कैपेबल, एक लेज़र को यूज़ किया जाएगा, किसकी जगह, फ्लाई स्वेटर की जगह। और उससे क्या होगा, वेपोराइजेशन, जो फ्लाई है वो 20 फीट हाई भी रहेगा, और लेज़र से हम लोग उसको किल कर सकते हैं, भगा सकते हैं। स्वेटर इज स्पेशली टू किल द इंसेक्ट्स feet, but a malfunction means if you are not using it in a proper way, कुछ उसमें गड़बड़ी हुई, malfunction मतलब कुछ गड़बड़ी हुई, तो it may cause a hole in your wall, कुछ गड़बड़ हुई तो वो लेज़र से दीवार में छेद हो जाने वाली है, तो ये थोड़ा रिस्की भी होगा। चलो, everything comes with a flip side. So prediction 6, in year 2040 cellular phones will be connected directly to the eardrum से directly कनेक्ट हो जाएगा सेलुलर फोन। नाउ यू डोंट हैव टू कैरी इट इन योर हैंड और पर्स और इन योर पॉकेट। स्मॉल एरियल्स मीन्स जो एंटीना निकला हुआ रहता है, दैट इज़ एरियल, जिससे कि सिग्नल कैच किया जाएगा। तो कान में ही ऐसे करके एरियल लगा हुआ रहेगा, विल बी सर्जिकली इम्प्लांटेड, मतलब छोटे बच्चे हुए नहीं कि उन लोग का सर्जिकली इम्प्लांट कर दिया जाएगा, क्या चीज़, फ़ोन, ताकि सेफ्टी भी रहे। फॉलोइंग द कर्व ऑफ द ईयर्स द नंबर्स विल बी डायल्ड विद वोकल कमांड्स, बोल करके, कोई टाइप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्या होगा, बस बोल करके ही नंबर डायल हो जाएगा। एंड मेनी पीपल विल बी सीन टॉकिंग टू देमसेल्फ, और अभी भी यू कैन सी पीपल आर यूजिंग ईयर प्लग, जो ईयरफोन होते हैं वायरलेस वाला, तो सब लोग अभी भी दिख ही रहे हैं, बिना कोई नहीं है, बात करते हुए नज़र आ ही रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट सो वेरी डिस्टेंट फ्यूचर, इट इज़ द रियलिटी राइट नाउ। सो नेक्स्ट इज डिवाइड, एंड वी हैव डिस्कस्ड दिस इन द क्लास। डिवाइड yourself into groups of 4. Each one of you should make one such prediction and then share the 4 prediction of your group with the whole class. तो बहुत सारा prediction हुआ था, like क्या prediction हुआ था भाई, ऑल वेदर सूट का हुआ था। ऑल वेदर सूट को ऐसा कपड़ा जो कि हर मौसम में सही होगा, और पीपल विल गो टू मार्स में जाके रहेंगे, एलियन से बात करेंगे, दे विल टॉक टू एलियंस, एंड देन व्हाट अदर्स वर, दे विल मूव अराउंड द डिफरेंट गैलेक्सी जो है उसमें वो लोग घूमेंगे फिरेंगे,
So there are so many things that can be predicted. Time machine banega, etc., etc. Now read the following thoughts and put a tick against the one which you think might start occurring in the near future. क्या क्या हो सकता है भाई? Now, the sun rises at night along with the stars. सनराइजेस एट नाइट अलॉन्ग विद द स्टार्स, ऐसा होने का चांसेस कम है, तो इसको क्रॉस लगाते हैं. द हिमालयस गो डीप डाउन इनटू द तेथी वंस अगैन, इसका भी थोड़ा चांसेस कम है, या फिर हो भी सकता है. नाउ इट इज़ ऑल अप टू यू. मिल्क इज सप्लाई डायरेक्टली टू आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस, ये तो डेफिनेटली हो ही सकता है. जैसे गैस पाइप्स, गैस लाइन्स अभी लग रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू हमारे घर में आ रहे हैं, तो ये मिल्क सप्लाई हो सकता है ना. टॉफ़ी स्टार्ट ग्रोइंग ऑन ट्रीज, दैट इज़ लेस लाइकली. या फिर हो भी सकता है स्टूडेंट कैरी फ्लॉपी सीडीज एंड पेन ड्राइव टू स्कूल इंस्टेड ऑफ बुक्स एंड नोटबुक, ये तो हो ही रहा है, तो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल. नाउ डोंट यू थिंक दैट लाइफ will become totally different if these changes take place in future? Sit in groups of these three and imagine some more events that you think might occur in the future and list them in the space given below. क्या enlist करना है? अपना इस जगह पर लिख दो भाई क्या क्या चीज़ यहाँ पर. You write down what could be in the near future. Now for the world tomorrow. Now read the poem. We do not know if the world will live for century or more. Century means 100 years. We do not know if a deluge means जब चारों तरफ पानी ही पानी होता है, ज़बरदस्त जो बाढ़ आती है उसको deluge कहते हैं. One day will sweep away, मतलब बहा देगा. away the last man alive, जो लास्ट इंसान जो जिंदा रहेगा उसको भी बहा ले जाएगा. deluge. We do not know if the world one day will end up like the हिरोशिमा में जैसे बॉम्ब, एटम बम, न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उसी तरह से कभी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी, कुछ ऐसा ही बॉम्ब गिरेगा. वी डू नॉट नो वेदर द हिमालयस वुड सिंक इनटू द थेथिस ओशन वंस मोर, वहीं से आया था और वापस उसी में चला जाएगा. वी डू नॉट नो वेदर आवर नेल्स वुड बी लाइक शार्प एंड डैगर्स कहते हैं जो कुदाल टाइप का रहता है, खोदने का काम आता है, कुल्हाड़ी टाइप से है ना, एक्स. तो हमारे नेल्स वैसे हो जाएंगे, डैगर्स की तरह हो जाएंगे. वी डू नॉट नो वेदर पीपल वुड स्टे ब्लाइंड एंड डेफ टू वर्ड्स ऑफ लव. ऐसा भी होगा कि जो दुनिया में इंसान रहेंगे दे विल टर्न ब्लाइंड एंड डेफ, मतलब दिखेंगे भी नहीं और सुनेंगे भी नहीं द वर्ड्स ऑफ लव. प्यार और ब्रदरहुड हारमोनी ख़त्म हो जाएगा. वी डू नॉट नो वेदर द वर्ड फ्रीडम वुड बी रिटन ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री अलोन. ऐसा भी होगा कि ये जो फ्रीडम है वो हिस्ट्री के पेजेस में रह जाएगा, मीन्स फ्रीडम नहीं रहेगा. वी विल बी इंस्लेव्ड बाय समवन और सम अदर एलियंस. वी डू नॉट नो. इफ़ अ हिस्टोरियन मीन्स जो हिस्ट्री लिखता है, वुड लीव टू पेन डाउन इवेंट्स इन द हॉल ऑफ टाइम, कि कोई हिस्टोरियन रह जाएगा कि ये हॉल ऑफ टाइम, ये जो टाइम में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं उसको लिखने के लिए वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं. वी डू नॉट नो. इफ़ वन डे वी would have no more questions to ask, yet then we will live to dream of a beautiful world. We will give our sweat and tears for the world tomorrow and leave behind at least a dream for those to follow. कुछ हो नहीं हो लेकिन फिर भी हम लोग होपफुल रहें और हम लोग अपने स्वेट और टीयर्स को दें ताकि ये जो दुनिया है सुंदर दुनिया बने. हम लोग अभी भी फिर भी इतना सब चीज़ के बावजूद वी आर थिंकिंग ऑफ अ ब्यूटीफुल टुमारो, एंड ऐसी दुनिया को छोड़ के जाएं जिसको लोग फॉलो करें, वैसे ही दुनिया बना के रखने के बारे में लोग सोचें. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय सुनील गंगोपाध्याय एंड ट्रांसलेटेड बाय शैला सेन गुप्ता. So this is a wonderful poem which tells about the agony and still being hopeful. Now on the basis of your reading of the poem, complete the statements given below by ticking the correct choice. The poet fears that the world might live only for a century. This is century. One day the world might end up like Hiroshima. The Himalayas might sink into the Tethys Ocean. Our nails would be like daggers, sharp daggers. The word freedom would be written on the pages of history. So this is done. On the basis of a reading of the poem, make a train
of events that might take place in the future world by filling up the given boxes. Now see here, just you read the poem and you will find what is happening around in the poem, the sequence, what is happening after what. Now see here, the world will live for the century, the deluge will sweep away everyone, the world will end up like Hiroshima, the Himalayas would sink into the Pacific Ocean, we shall have no more question to ask, our nails would be like sharpened daggers, people will stay blind and deaf to love, freedom would be written on the pages of history. Now HOTS is a Chotia's higher order thinking skill. The poet expresses his concern about the future world and dreads the occurrence of deluge. Deluge means baad pani bahut sara. Do you think the poet apprehensions can become a reality? Apprehension means जो उसको जो बुरे चीज़ की आशंका है, that is apprehension, that he is predicting something wrong, something bad will happen in the future. If yes, what would be the consequences? Consequences means the result. क्या उसका result होगा? The poet apprehension might become a reality. This is reality. Reality due to global warming. If ever it would happen, the world will submerge, मतलब पानी में डूब जाएगा, in water, and everything will be destroyed. सब चीज़ खत्म हो जाएगा. Now values. Despite fears for future world, the poet wants us to live and dream of a beautiful world and to give our sweat and tears for it. हम लोग अपनी तरफ से कोशिश ना छोड़े. We must not give up hope and we must keep on trying for a better tomorrow. So list at least 5 values we need to foster in order to make this world more beautiful. क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? Live in harmony, हम लोग एक साथ brotherhood के साथ रहें, hatred ना करें, spread happiness, understanding for each other, sacrifice for others' well-being, sensitivity and kindness towards nature and animals. ऐसा कर लें तो आने वाला दुनिया अच्छा रहेगा. And if we want to make the world a better place to live, we have to look back and see what difference are there in the world of today and that of yesterday. आज की दुनिया और कल की दुनिया में बहुत फ़र्क है. जो बीता हुआ कल, yesterday. History shows that humanity has progressed and many changes have taken place in this world. Humanity means the property, the values, the attributes of human. A few of these changes can be described as landmarks in the progress of humanity on a timeline. You have already studied the concept of timeline in your previous class. Just try to recall that your birthday वाले में कि तुम लोगों ने टाइमलाइन बनाया था कि when did you where you born, what was your important achievement, important days, time of your life. So you have done it in standard 6 and you have to make it here also. The future timeline of humanity. Now you have to read this tape script. चलो तो पहले tape script हम लोग पढ़ लें. That is at the last of the chapter. Tape script में क्या था? This is the tape script. अभी this is it. Read it yourself. Okay. This is the tape script. The vision into the future of the humanity. It is expected that by 2050 the scientists will have the detailed description of how life began on Earth, and by the same year automated traffic control shall have given rail-like traffic flow to roads. जैसे रेल का फ्लो हो रहा है, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, ऑटोमेटिकली कोई खड़ा नहीं रहता है, ट्रेन अपना फ्लो सिग्नल को फॉलो करती है ऑटोमेटिकली. उसी तरह से रोड में भी ये चीज़ आ जाएगा. बाई 2100 द लॉन्गिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ शैल इंक्रीज. अभी हम लोग का क्या चल रहा है? 2022. और जब ये 20 जो है ना, ये 21 हो जाएगा, यानी आफ्टर कितने साल के बाद हो जाएगा? ये माइनस कर लो तो कितना साल हो जाएगा? 88 ईयर्स के बाद. नो नॉट 88, 78 ईयर्स के बाद. तो क्या होगा? लॉन्गिविटी मतलब जो ह्यूमन लाइफ है वो लंबा हो जाएगा बाय 30 ईयर्स. एंड अनदर अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि.
by man by this time would be that human beings will be able to record all that they ever see. अब है ना कुछ स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही रिकॉर्ड होता चला जाएगा. ह्यूमन की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी, हियर और से जो भी सुनेंगे बोलेंगे देखेंगे उन्हें याद हो जाएगा, रिकॉर्ड कर सकते हैं. बाय द ईयर 2150 अ मैन शैल हैव established an unmanned radio observatory on the far side of the moon. वहाँ पर रेडियो ऑब्जर्वेटरी लग जाएगा ताकि वहाँ से भी सिग्नल को मतलब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टाइप से हो सकता है. बाय 2022 मतलब 1100 मोर ईयर्स के बाद परमानेंट मैन्ड स्पेस स्टेशन इन अर्थ ऑर्बिट शैल हैव बीन स्टैब्लिश्ड. मतलब बहुत प्रोग्रेस करने वाला. बाय 2250 मोस्ट जेनेटिक इन्फेक्शियस एंड कैंसरस डिजीजेज वुड बी प्रिवेंटेबल. जो आजकल बहुत सारे जो डिजीज़ है ना जिसका कोई इलाज नहीं है, वो सारे डिजीज़ का इलाज होने लगेगा. बिकॉज कंटिन्यूसली इन द मेडिकल फील्ड देयर द रिसर्चेज आर गोइंग ऑन. तो ये सारा चीज़ पॉसिबल हो सकता है उस वक्त के टाइम तक. बाय 2300 मतलब उसके भी 100 साल आगे द अर्थ पॉपुलेशन वुड बी स्टैब्लिश्ड एट अराउंड 20 बिलियन. बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड दिस इज़ द टेप स्क्रिप्ट. So now on the basis of tape script, let's do it. This is year 2050. Event which might occur in the given year. Detailed description of how life began. Automated traffic control shall have given rail-like traffic flow on the roads. 2100 when the average span of human life will be increased by 30 years. Human beings will be able to record all what that they see or hear. To 2050 में क्या होगा, रेडियो ऑब्जर्वेटरी बन जाएगा. कहाँ पर? ऑन द फार साइड ऑफ द मून. परमानेंट मैन्ड स्पेस स्टेशन इन अर्थ ऑर्बिट शैल हैव बीन स्टैब्लिश्ड 2150 में. 2250 में उसके 100 ईयर्स बाद मोस्ट जेनेटिक इन्फेक्शस एंड कैंसरस डिजीज विल बिकम क्यूरेबल. मतलब उसका ट्रीटमेंट हो सकता है. क्यूरेबल मीन्स ट्रीटमेंट हो सकेगा, उसका इलाज हो सकेगा. 2300 उसके 50 साल के बाद द अर्थ पॉपुलेशन विल बी स्टैब्लिश्ड एट अराउंड 20 बिलियन. राइट नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अराउंड 8 बिलियन एंड इट विल बी नाउ एट दैट टाइम इट विल बी बिकॉज लॉन्गिविटी हो जाएगी, बहुत दिन तक लोग जिएंगे, तो 20 बिलियंस बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे. Now imagine your mother realizing the important contribution education can make to create an ideal world. You decide to encourage your friends to volunteer. Volunteer means अपने आप ही बिना किसी पैसे के या फिर बिना कुछ बेनिफिट के you are coming of your own to teach the underprivileged. Underprivileged जो कि जिनके पास कुछ कमियां हैं, they are not as blessed as you are. Write a notice for your school notice board inviting students to register their name for the noble cause. Noble means जो अच्छा काम होता है उसको कहते हैं noble cause in the space given on the next page. Now see, this is an example of this notice writing and fill it. I am trying to write with this and my writing won't be good. So DAV ट्रांसपोर्ट नगर ये हो गया. नाउ यू हैव टू राइट डेट. टुडे इट इज़ 12/01/22 and topic would be what will be the title of this, like write down title opportunity to educate. Opportunity to educate. Write the spelling properly. My pen, this is not working in a proper way, so just listen to me and write it. This is to inform all the students that
our school has come up with the noble idea to help underprivileged children, 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 treating them by educating them. Now इसके बाद now continue here, educating them with free education, educating them. Now next is now अब बोला जाएगा कि interested students are instructed or are instructed to give their name to their class teacher for registration. You must write in good handwriting, dear students. And now you will, at the end, it is written by Madhav. And now let's, given column B gives the effect of the entries in column A match the entries in the two columns. International rivalries. What is international rivalries? उसी के कारण क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था. एक्सेसिव पोल्यूशन से क्या होगा, स्किन डिजीज होगा. नो दिस विल बी नॉट ये हो जाएगा एनवायरनमेंट अनफिट टू लिव. अगर ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट अनफिट टू लिव हो जाएगा. ओजोन होल होगा तो अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, दैट इज़ bad for skin. Unlimited use of technology, man will become slave to technology. This is it. Now list few objects that you handle with care. So क्या क्या care से करते हुए, मोबाइल, लैपटॉप, earphone. Now you can add more things that you keep with proper care. Have you ever read instruction on certain things that are to be handled with care? Develop a set of instruction to be imprinted on the package of valuable objects that are to be handled with care. ये गलत है. You have to write the instruction. What would be the instruction? Just check things that you handle with care. उसमें तुम्हें मिल जाएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे लिखा जाए. That you handle with care. And you will get number of instruction कि कैसे उसको instruction करना है. Now, can you imagine handling human beings with care? Read the following play to find out the mystery. Mystery means रहस्य, the secret. And this is one act play. One act play means in one scene only the whole act has been completed. Whole play has been completed. Now major character, woman. And this is policeman, passenger, passerby 1. Passerby 2 and motorcyclist. Now a woman in her 30s means, woman in her 30s means she is 31 to 39 years old. मतलब 31, 32, 33. अगर ये 30s बोला जाता है तो 30s वाला जो
नंबर होगा ना, उस एज की ये वुमन है। वियरिंग अ ग्लास मास्क एंड अ हैवी शाइनिंग रेनकोट लाइक गारमेंट, गारमेंट मीन्स कपड़ा। अ प्लेस प्लाकार्ड, प्लाकार्ड एक जो बना रहता है इस तरह का, जिसमें कुछ या सेव वाटर वगैरह का तुम लोग प्लाकार्ड बनाते हो ना, उसी तरह का प्लाकार्ड उसमें लगा हुआ है। दैट इज बॉडी हैंडल विथ केयर इज हैंगिंग अराउंड हर नेक। And now all the passers-by, policemen and motorcyclists and all the passerby are wearing silver-colored masks and strange dresses. Strange means बहुत अजीब सा ड्रेस पहने हुए, means they are something different, not humans. The scene of late 21st century, 21st century, late 21st century means अभी कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये हम लोग का अर्ली 21st सेंचुरी है, राइट। दिस इज़ अर्ली, क्योंकि अभी 50 ईयर्स नहीं आया, 50 नहीं आएगा, 50 के बाद जब आएगा, और 90 जब 2091 हो जाएगा या फिर 2095 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, लेट 21st सेंचुरी। ओके, नाउ अ सीन इज ऑफ अ लेट 21st सेंचुरी स्ट्रीट कॉर्नर। अ फॉगी मीन्स पूरा कुहासा वाला, रन डाउन एंड पोट होल्ड स्ट्रीट कॉर्नर विद, मतलब रन डाउन मतलब बहुत यूज़ किया हुआ, रन डाउन मीन्स दैट इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन। एंड पोट होल्ड मतलब बहुत सारा गड्ढे वड्ढे वाला स्ट्रीट कॉर्नर विद डायलेपिटेड हाउस, मतलब बहुत बुरे कंडीशन में हाउसेज हैं, डायलेपिटेटेड। सो डिलापिटेटेड हाउसेज, लेन, स्ट्रीट लैम्प्स, पेवमेंट एक्सेट्रा। ऑन एंड ऑफ showers of acid rain occurs, acid rain भी हो रहा है वहाँ पर। द सन इज रेडिश ऑरेंज एंड इज हैंगिंग ओवरहेड, मतलब सर के ठीक ऊपर है, जिसका कलर कैसा है। नाउ सी हियर, सन इज हैंगिंग ओवरहेड मतलब सर के ऊपर है, लेकिन उसका कलर कैसा है, रेडिश ऑरेंज। रेडिश ऑरेंज कब रहता है, व्हेन इट इज सेटिंग और राइजिंग, बट हियर इट इज ओवरहेड एंड इट्स कलर इज दिस। इट इज़ ऑल स्मोकी एंड हेजी, हेजी मीन्स जो एकदम धुंधला दिख नहीं रहा है। सम बींग्स आर लोइटरिंग, मतलब लीजरली वहाँ पर अपना घूम रहे हैं ऑन द स्ट्रीट कॉर्नर। अ वुमन इज ऑल्सो मूविंग अबाउट, एक वुमन भी चल रही है। सडनली अ मोटरसाइकिलिस्ट अपीयर्स एंड on the street and the woman walks straight into his path. She is hit by the motorcyclist and falls down. A policeman standing at the corner notices the accident and signals the motorcyclist to stop. The motorcyclist waits for the policeman as the latter approaches him with a baton. Baton is a type of stick. ठीक है, तो वो अपना छड़ी लेकर के पहुंच रहा, अपना जो बैटन है वो उसको लेकर के पहुंच रहा। सून 4 पासर्स बाय क्राउड इन ऑन फॉलन बॉडी, वहाँ पर भीड़ लग जाती है पासर बाय। नाउ पुलिसमैन अप्रोचेस द मोटरसाइकिलिस्ट वेविंग द बैटन, अपने जो उसके पास जो भी इक्विपमेंट बैटन है, डंडा है, उसको वेव करते हुए उसके पास आती है। हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर, कुडंट यू सी और सेंस द लेबल सो प्रोमिनेंटली, प्रोमिनेंटली मतलब बहुत अच्छी तरह से दिखने वाला। डिस्प्लेड ऑन दिस बीइंग, आर योर सेंसेस नॉट वर्किंग, तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। बट मोटरसाइकिलिस्ट बोला, बट दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है। दिस बीइंग वॉज वॉकिंग क्वाइट नॉर्मली ऑन द फुटपाथ, इट सडनली टुक अ टर्न एंड केम इन माई पाथ, वेविंग ऑफ एन इमेजिनरी मतलब उस क्लाउड कुछ गैसेज है उसको हटाते हुए। वॉट कुड आई हैव डन इन दिस मर्की डार्कनेस, मर्की मीन्स मतलब दैट इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट, तो ये बेकार सा जो डार्कनेस है मैं क्या कर सकता हूँ। पुलिसमैन, आई विल फाइंड आउट, मैं पता करूँगा। यू बेटर वेट, यू डोंट नो वॉट यू हैव डन। हिटिंग अ हैंडल विथ केयर बीइंग अप्रोचेज द फॉलन बॉडी वेविंग अवे द पासर्स बाय विद हिज बैटन, वो अपने डंडे से सबको हटा रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसको, दैट इज हैंडल विथ केयर बीइंग को। पासर बाय नंबर, येस द लेबल इज़ वेरी मच देयर। अब जब बहुत सारे भीड़ लगते हैं तो सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, तो नाउ दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग। पासर बाय नंबर 2, yes वेविंग ऑल ऑफ अ क्लाउड ऑफ गैसेस, वी कैन ऑल सी इट, वाई कुडंट द मोटरसाइकिलिस्ट सी इट फ्रॉम द डिस्टेंस, उसको नहीं दिखाई दिया। नाउ पासर बाय नंबर 2, इट इज़ अ ग्रेव क्राइम दीज डेज, कि भाई जैसे अभी टाइगर को आप शिकार नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से इस जगह में बात हो रही है कि इट्स अ ग्रेव क्राइम दीज डेज अप्रोचिंग
द फॉलन बॉडी, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गलती है। ग्रेव मीन्स बहुत ही बड़ा वाला गलती। इट्स अ ग्रेव क्राइम टू हिट एनीबॉडी विद द हैंडल विद केयर लेबल। Policeman, yes, I heard only the other day these handled with care beings are becoming extinct, मतलब खत्म हो रहे हैं at a fast rate. Beings to examine the fallen body takes out a census from his pocket, presses it against the chest of the fallen body and watches its dial. देखो ये now see the scene. This is a fallen being and these are the people. It means these are the people now who are dominating on earth. Now passerby 1, is it dead? Passerby 2, is it senseless or simply unconscious? इसको सेंसलेस हो गई है क्या या बेहोश हो गई है? ओह, these handled with care beings are really delicate. बड़ा ही delicate मतलब बहुत ही नाजुक होते हैं. Indeed, that's why they are labeled handled with care. Isn't it? All passes by including policemen laugh. सभी लोग हंसने लगते हैं कि भाई इतना भी कोई डेलिकेट कैसे हो सकता है कि भाई एक मोटरसाइकिल का धक्का लगा और गिर करके बेहोश हो गए. Policeman, no, it's not dead. Watches the dials on the sensors. उसके पास जो सेंसर है उसमें वो डायल्स, जो उसमें डायल बना हुआ रहता है, जैसे घड़ी में डायल रहता है ना, उसमें उसने देखा कि ये हिल रहा है. It is very much alive now. What should be done? It's a rare occurrence. ऐसा बहुत कभी कभी होता है. मोटरसाइकिलिस्ट हिटिंग हैंडल विद केयर बीइंग, द बीइंग इज अनकॉन्शियस मतलब बेहोश है. थिंकिंग देन टर्न टू द पासर बाय, और डज एनी वन अमंग यू नो what the first aid should be given to it? Suddenly remembers something and begins to search for it on his body. कुछ उसे याद आता है और जल्दी से वो ढूंढने लगता है अपनी बॉडी में. Now let us take it to the hospital. What does a hospital do? अब ये लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में सब लोगों के पास एक टॉपिक मिल गया है बात करने का. नाउ दे आर डिस्कसिंग, क्या भाई हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल होता क्या है. Passerby number 3, oh, it's a kind of repair station for these delicate beings. Here they recover their lost limbs. Limbs मतलब पैर, limbs को हम लोग हाथ भी बोलते हैं, पैर भी बोलते हैं. Four limbs मतलब your arms and hind limbs मतलब तुम्हारे पैर. So lost limbs and organs as we do in our repair stations. You know that they are purely biological beings. मतलब they are purely biological beings. It means these passers-by are not biological, not at all sturdy like us. Sturdy means rough and tough. All passers-by laugh. Passers-by number 4, okay then, pointing at the fallen body, let's take this handle with care to the hospital. Now they are taking this to the hospital. Passerby 3, yes, why not? Let's take it fast, but handle with care. With care, all passers-by laugh. Meanwhile, the policeman has fished out. Fished out means अपना बैग में से ढूंढ करके निकालना कोई चीज़ को, तो fished out. This is a phrase. A calculator-like gadget marked instructions tool and is reading the instruction. He gets up suddenly. उसने अपना एक गैजेट निकाला, उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगा और अचानक से वो खड़ा हो गया. सडनली पुलिसमैन, वेट डोंट टच द बॉडी, ब्रिंग सम वाटर इमीडिएटली, कुछ पानी लेकर के आओ जल्दी से. इमीडिएटली मीन्स एज सुन एज पॉसिबल. पासर बाय नंबर 4, अबाउट टू लिफ्ट द आर्म्स ऑफ द फॉलन बॉडी, टर्न्स टू पुलिसमैन, वाटर, डू यू मीन दैट ट्रांसपेरेंट, जो आर पार दिखता है, लिक्विड विच दीज पुअर बींग्स ड्रिंक एंड यूज फॉर वेरियस पर्पसेज. Yes, it must be the same, but it is scarce nowadays. Scarce means which is available in very less amount. Available only in the ghettos where these people, ghettos अब मतलब यहाँ पर जो ghettos जब बात कर रहे हैं तो these are not a proper जो slum area type का जो जगह होता है उसको कहते हैं ghettos. Or you may say that a place where same kind of people or same kind of रेस लीव्स इन पुअर कंडीशन, मतलब अच्छा जगह नहीं है, एक तरह से बहुत हेल्दी कंडीशन में नहीं रहते हैं. गेटोज, नाउ दे आर कॉलिंग गेटोज, नाउ दीज आर द वर्ड. नाउ पासर बाय नंबर 3, yes, those bubble like structure which contain special environment for their kind. You know, they cannot live in this rough and tough environment of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrous oxide. All these are not suitable. All these gases are poisonous.
with no sunlight and acid rain pouring every other day. Those ghettos contain none of these elements with which we are familiar. मतलब ये लोग जिस environment में रह रहे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब और यहाँ पर एसिड रेन भी हो रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर द हैंडल विद केयर बींग्स. Now passerby number 1. Have you ever been to ghettos? No, none of our kind is allowed there, but there is a kind of us, delicate ones, और इन्हीं लोग की तरह वहाँ पर सारे लोग रहते हैं, delicate ones which ones who work for these beings in the ghettos. They are also delicate like they are handled with care masters. They cannot stand the open environment outside. All passerby laugh. सब लोग हंसते हैं कि बड़े अजीब है ये लोग, ऐसे एनवायरमेंट में नहीं रह सकते हैं. पुलिसमैन वेविंग द बैटन, अपने डंडे को हिला करके बोलता है, हे यू आर ऑल लाफिंग एंड देयर इज़ नो गेटर्स फॉर सेवरल किलोमीटर्स अराउंड. भाई मैं कहाँ से, तुम लोग हंस रहे हो, और यहाँ पर इस जिस जो बींग गिरी हुई है उसके लायक रहने का कोई जगह काफ़ी दूर में है. आई बेटर कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म. इसको बचाने के लिए ये करना पड़ेगा. नाउ गेटिंग अप. Now woman is getting up. No, no, please don't contact any police station. Please don't do that. Peers at the faces around her through the oxygen mask. मतलब peers मतलब झांकना, अपने मास्क में से सबको देखती है अपने ऑक्सीजन मास्क के साथ. मोटरसाइकिलिस्ट, अब है ना वो खुश हो गया. अरे till then standing awkwardly by the side of his motorcyclist and watching the reaction of the passerby and policeman quietly, क्योंकि ये तो कल्प्रिट था, इससे एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बेचारा खड़ा था एकदम awkwardly. Hey, you are alive, you are not dead. Starts dancing. I am relieved, I am saved. Policeman, why is it so? Policeman, we are not supposed to harm these handled with care beings, not to speak of killing them. उन लोग को तो हार्म किल करने का तो दूर, उन लोग को हार्म भी नहीं पहुंचाना है. देयर पॉपुलेशन इज ऑन डिक्लाइन, कम होता जा रहा है. इवन टू किल देम बाय एक्सीडेंट इज अ सीरियस क्राइम. ऑल पासर्स बाय कोरस. इवन बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी. यस, इवन बाय एक्सीडेंट. डस्टिंग ऑफ हर सूट, मतलब अपने सूट को झाड़ते हुए. बट दिस वॉजंट एन एक्सीडेंट. पुलिसमैन, व्हाट, नॉट एन एक्सीडेंट, व्हाट वॉज इट देन? वुमेन कम सेंटर स्टेज, मतलब बीच में आ जाती है, एंड एड्रेसेस द ऑडियंस. अ सुसाइड. टर्न्स टू देम. यस, अ सुसाइड माय डियर. passerby number 2. A suicide, what does it mean? Woman, okay, let me explain things. It's killing oneself by one's own choice. भाई खुद को ही मारना है, that is suicide. Motorcyclist, oh you mean you purposely came in my way, in my path to get yourself killed? Yes, looks around. That's what I intended to do. मतलब मैं यही करना, इंटेंट में मतलब मेरी यही मंशा थी. I wanted to do that only. Motorcyclist, but you would have put me in a jail. ये आधा बात बोल के ही रुक गया. Woman addressing the audience, but I was keen to die. Keen मतलब I was eager, मतलब मेरा मन था वैसा करने का. Passerby number 3. But waving off a cloud of gases. Why did you want to destroy yourself? Destroy means अपने आप को खत्म करना, अपने आप को बर्बाद करना क्यों चाहते हो? You beings all have the facilities and amenities to live in. सारा facilities है, सारी सुविधाएं हैं, फिर क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हो? Oh, is that kind of living you call life? Enclosed bubble-like chambers where everything is artificially available, air, water, rain, everything. Oh no, I am sick of it. I feel suffocated. Suffocated means when you are not able to breathe properly. And claustrophobic. Claustrophobic means that is very small and compact place. जहाँ पे भीड़ में एक दूसरे के साथ बहुत कंजस्टेड वे में रहना पड़े, उसको कहते हैं. आई वॉन्ट टू लिव इन ओपन, बट वॉट अ मेस वी हैव क्रिएटेड ऑन द मेस मीन्स रबिश ऑन द surface of this earth. We have lost the greenery, we have lost the animals and birds, the air, the sun, we have lost everything. Addressing the audience, what is there to live for? क्या है दुनिया में जीने के लिए? Passerby number 2. What you mean? You beings are responsible for this environment in which we live. Woman, yes, directing her hands at herself and the entire audience. We human beings are responsible for this environment full of noxious and toxic gases. जहरीली गैसों के साथ जो हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं
उसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं. माइंड यू, it was not created in one day. It was created over several decades due to our environmentally unsound activities. जो एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी वो सारे हम लोगों ने किए. More factories, more goods, more gadgets, more flying ground vehicles, more robots, etc. The real villain was not technology but money and greed. The whole place, greed means lalach. The whole place is now polluted with nowhere to go. The moon and all the planets have been found unfit to live. कोई भी जगह रह नहीं गया है जो कि रहने के लायक रह गया हो. Polluted? What do you mean? Woman, this environment is all right for you beings. You can work in this environment. Hazardous means dangerous, harmful to life or otherwise, but we need oxygen to live. There is hardly any left in the atmosphere, pointing at the mask she is wearing. That's why we all have to wear oxygen mask. Passerby 2. Oh yes, you are all delicate beings. We don't have any problem with this atmosphere. Woman, oh, you can live wherever you like. We have built you in that manner, and you all have proliferated over the years. मतलब तुम लोग और उन लोग का पॉपुलेशन बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है. फर्स्ट, ओ यू मीन यू बिल्ट ऑल ऑफ अस. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया इन लोगों के लिए. वुमेन, वेल नॉट मी एग्जैक्टली बट माई काइंड. मेरे ही जैसे लोगों ने तुम्हें बनाया है. येस, वी डिजाइंड एंड बिल्ट यू सो दैट यू कैन वर्क इन दिस एनवायरमेंट. Passerby number 4. But how can it be? How can delicate beings like you build sturdy beings like us? बड़ा अजीब बात है. ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग इतने डेलिकेट हो, तुम लोगों ने हमें बना दिया. Women, yes, we built you sturdy so that sturdy means rough and tough, so that you could perform tasks that we cannot do easily. But over the decades, your kind has taken over the control. मतलब तुम लोग इतने सारे बढ़ गए कि हम लोगों के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया. एड्रेसिंग द ऑडियंस, ओह नो, ग्रीड एंड मनी हैव लैंडेड अस इनटू दिस. मोटरसाइकिलिस्ट, ओह दैट्स व्हाई यू आर लिविंग लाइक अ प्रिविलेज्ड सिटीजन्स. आई ऑलवेज आस्क माई सेल्फ, हाउ कुड डेलिकेट बींग्स लाइक यू बी सो स्पेशल. दैट्स यू आर लेबल्ड राइट्स इन air handled with care. In fact, this earth herself needed to be handled with care. But we human beings, instead of handling her with care, ruled over her ruthlessly. Ruthlessly means very hard and cruel, determined to get what you want, and you are not showing any kindness, any pity. बस अपने मतलब के लिए बुरी तरह से बर्ताव करना. Before us, dinosaurs became extinct because of a change in environment. We are soon going to be extinct. हम लोग भी extinct हो जाएंगे. Because we change the environment, you beings will soon be rulers. और तुम ही लोग यहाँ के rulers बनोगे, मतलब राजा बनोगे. We human beings are now doomed. मतलब हम लोग अब बर्बाद हो चुके हैं. हम लोग का यही भविष्य है for extinction. Gets down on her knees, pleads with everybody, addressing the audience. Now see here, this paragraph gives a strong message to the audience. I cannot live any more on this borrowed time. I want to die. I want to die. Please kill me. Policeman, oh, none of us can do that. It's forbidden to us. Asimov's law. अब यहाँ पर कुछ लॉ है जो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते. पासरबाई नंबर 4. बट देयर इज एन ईजी वे आउट फॉर यू. अब ये सजेशन आ रहा है भाई कि तुमको मरना ही है तो कैसे मर सकते हो, तो एक वो रास्ता बता रहा है. वुमेन गेट्स अप एंड सीजेस द पासर्स बाई आर्म. व्हाट इज इट, टेल मी क्विकली प्लीज. एंड दिस वुमेन इज सो डेस्परेट टू डाई, किल हर सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट. ओह यू मीन यू बिल्ट ऑल. Just open your oxygen mask and you will, as you only said, inhale the toxic gases and die. As though struck dumb for some time, then turns to a passerby. Oh, how simple. This never occurred to me. A simple logic. बहुत ही simple सा logic है. Addresses the audience. I have got so used to oxygen mask that it has become a part of my own self. I had totally forgotten that
It is an artificial appendage. एक artificial appendage है. The meaning of appendage is there written there. See the downstairs. Laughs at herself and turns to the passerby. You are all good at logic. I know. We built you robots with excellent logical capabilities. Thank you for your suggestion. Policeman suddenly pushing himself forward. Hey, wait. What about your body? Somebody will notice it and howl all of us. अगर तुम्हारा बॉडी को लोग देख लेंगे तो पूरा हल्ला गुल्ला मच जाएगा. नो यू नीड नॉट वरी. जस्ट रिमूव माई एंटी कॉरोजन सूट. और तुम्हें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जो एंटी कॉरोजन सूट है उसको हटा दो. माई बॉडी विल डीके वेरी फास्ट इन दिस corrosive environment. Corrosive means that can be destroyed chemically. जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है वो डिस्ट्रॉय होता है. दैट इज corrosive things. Making a sign of disappearance. Nobody will know where my body has disappeared. Passerby number 2. Oh, is that so easy? But nothing happens to us. अब इन लोग को अपना चिंता ना हो, अपने आपको सेफ रखना है तो कुछ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वुमेन, यस, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लूजर्स एंड विनर्स. begins to untie the mask. And this is such a story which is strong message ki bhai we have to protect our mother earth. Now on the basis of reading of the play, complete the following statement. The policeman stopped the motorcyclist because he hit a woman and she fell unconscious. The motorcyclist insisted that the accident was due to the woman's fault because she suddenly took a turn and came in his path. Hitting a handle with care creature was crime because they were becoming extinct. EXTINCT. The policeman wanted to contact Ghetto because he wanted water for unconscious woman. Now the woman said she purposely came in the path of the motorcyclist because she wanted to commit suicide. Full stop. Now given below the weather forecast for the Tuesday in the month of July in the present day environment. Read it carefully. Now see this weather. आज का weather इस तरह से forecast होता है. Mainly cloudy sky, rain, thunder, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे. Showers in some areas. Maximum temperature will be around 30 degree. Relative humidity 35 degree. 85% and minimum 51%. Sunset on Tuesday. This and sunrise at this. This is normally it happens. Now taking clue from it, write a weather forecast for the environment condition described in the play. ये जो one act play है उसमें उसके हिसाब से कैसा weather होगा. तो mainly smoky hazy sky, acid rain in many areas predicted. Maximum temperature will be 85 degree. Relative humidity 30%. Minimum 20%. Sunset on Tuesday 8 PM क्योंकि बहुत गर्मी है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो सनसेट कितने बजे हो रहा है? 8 बजे शाम में हो रहा है. और सनराइज सवेरे 4 बजे ही हो जा रहा है. सो यू कैन प्रिडिक्ट एंड यू कैन राइट इट ऑफ योर ओन. इफ़ वी आर टू लिव इन सच सर्कमस्टांसेस, हाउ शैल वी लिव? If we are to live in such circumstances, we will have to have special kind of attire, houses and safety kit. नहीं तो ऐसे environment में हम लोग नहीं रह सकते हैं. Value the play handled with care clearly gives an insight into the plausible effect. Plausible effect, that is quite a reasonable effect. That could be easily understood. Plausible effects of the environmentally unsound activities by the human who seem to be blinded by greed for money. Get into a group of 3 and discuss what role you can play to protect your environment. क्या कर सकते हो भाई? Now read the following definition and write the corresponding terms from the text. Bubble-like structure which contains special environment for the handle with care. Ghettos, transparent liquid which they drink and use for various purposes. Water, a repair station for delicate beings where they recover their lost limbs or organs. That is hospital, and artificial instrument that help the handle with care creatures in breathing. That is oxygen mask. Now police man writes the following email to handle with care creature association information about the accident of the handle with care. Now see, this is one specimen of email. This is one specimen of email. You have to answer it, and this is the answer. You can write it of your own. Just see here. Email to from and the subject, and then this is
one example. Now look at the cover pages of the 3 issues of Future Chronicles. देखो ये लोग कैसे Future Chronicles तुम लोग इन लोगों ने बनाया है. Now these are the cover page. And now design the cover page for the next edition of the Future Chronicle. Now do it yourself. Do it yourself. Now next is read the following new items. The first human cloned embryo. Mumbai में ऐसा हो रहा है. 20 scientists have been able to clone human cells. Cloned human embryos have been generated from eggs in the process called parenthegenesis. Now see all these different things that is going on. Now read the contest given. Read the contest given below. Future Chronicle headline contest. Write creative headlines and win fabulous prizes. After all, after having a glimpse of what the world might be in future, if we do not check our activities, let us read some new news about future times by going through the pages of the Future Chronicles, a monthly news magazine. Now write 2 creative headlines for Future Chronicle. What are the headlines? You can write like this is not visible, like inbuilt oxygen generation in humans. 1 कैप्सूल और एक कैप्सूल से ही पूरे ज़िंदगी भर का खाना काम चल जाए, किचन का ऑल झंझट ख़त्म. 1 कैप्सूल एज फूड फॉर होल लाइफ. You can write, you can imagine and write. Expand these lines into, ये हेडलाइन है, ठीक है. अब उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है. Now listen to me. Now the human beings will have a inbuilt oxygen supply system instead of oxygen cylinder. अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह उन लोग के पास सप्लाई सिस्टम होगा. नो नीड फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर एंड फूड, एज साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड अ कैप्सूल विच विल टेक केयर ऑफ एवरी नीड ऑफ द ह्यूमन. सारे चीज़ों की ज़रूरत एक कैप्सूल पूरा करेगा. नाउ रीड द फॉलोइंग फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्स, फिक्शन एंड फैंटेसीज वी गॉट फ्रॉम द kids' mouth. I think the future will be cool when the weather is not good. All you need to do is to push a button and your school will be above the clouds. All the school will have computer instead of school buses. There will be flying boards. Now see, सब लोग अपना अपना आइडिया दे रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, this will happen or that will happen. Now on the basis of the reading of the kids' comment, complete the following statement. Shaurya feels that if the weather is not good, she would just push a button to call her school just above and cloud वो बादलों में ही अपने स्कूल को बुला लेगी. People will go to colonization camps to have access to books and around the books around the globe. Have access to books that is around the globe. सारी दुनिया का किताब वहीं पर एक जगह में मिल जाएगा ना. CD-ROMs will be like stickers which can be folded. This reader type will replace school bags. If we were sick, we would be able to attend our classes by plugging computer into the school channel. That is quite, we are doing that now. Now match the following names of the children with the innovative ideas they have proposed. Innovative मतलब कुछ नया idea. Now what is their idea is, Suprina has given the idea of space colonization camp. Shaurya has given flying boards. Jimit Shah has given disk reader type. Sanya has given learning on school channel, and Chirag has given encyclopedia in multimedia software. Now what's given below is an advertisement of the future estate, a property dealer who is constructing apartment in the Mars. Now see here, so such lovely posters, advertisement hai. This is an example of advertisement ki what facility it is providing. Leave a private home in a lively township, presenting dream option in Mars City.
तुम लोग है ना पेपर में भी इस टाइप का बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देखते होगे, और उसमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, दीज आर द फैसिलिटीज इट इज़ प्रोवाइडिंग. Now develop a radio presentation advertising Mars City. You may add your own features, make the presentation before the class. So be ready for this activity. You have to be a radio jockey. Solve the crossword puzzle using the clues and other help given below. Just see it. This is the first one. This is technology, this is encyclopedia, this is Xerox, this is couple, this is now according to. Now read it yourself. You have to read it yourself, the keys of success. Now that's all. I hope the chapter is complete. That's all. Thank you. Bye bye and study hard.